Hello, and welcome once again to the 6th day of our program. Abhip Samant Pranam to all. Today is the 6th day, and hopefully, I'm sure that very happily you must have completed the numericals from reflection from spherical mirrors. Raise your hands. How many of you have finished? Because you know physics is your forte. Chemistry is not. So you little sigh away to complete the chemistry practice questions, but I insist you do both. And I'm sure that you might not have got any difficulty because did all the answers match? Did all the answers match? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sir, Today, yes, any doubt? so 7 number. Anybody watching from remote? Not yet come. Anybody who is watching us live in YouTube, please say hi to me. Say hi to me. Okay. We'll do that. So before we take up the doubts, to spend some time on doubts, because those were very simple questions. And someone asked me, Abhipsa, who asked me? Question number 7 or something. Who? Who asked me? Rajiv. Rajiv, Yes. your voice is coming in class 10 like a girl. Are you a girl? I thought she's Abhipsa. So you are now class 10, a grown-up boy, and you are heading towards a manhood, and your voice is coming like a girl. Same unto you, Rajiv. Okay, we'll do that. Now let us see how easy this refraction through spherical lenses. There I said reflection from spherical mirrors. Here I'll say refraction through spherical lenses. Are you able to see? Raise your hands. Are you Yes, able to sir. see? Now see, you know, electromagnetic radiations
They are all transverse waves. May it be UV, may it be visible, may it be IR, whatever. It has got its wavelength and it has got its frequency. That is how many full waves are passing through a particular point in 1 second. How many full waves? So you start from here, then coming back to here is a full wave. So how many full waves are passing through a particular point in 1 second is called frequency. Abruti, এটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, crest to crest বা trough to trough যা भी हो একা, এটা wavelength. And you know, in air or most appropriately in vacuum, visible radiation or light have the wavelength range approximately from 4,000 to 8,000 angstrom or 400 to 800 nanometer. Approximately, actually 3,700 to 3,800 to 7,600. So, but we say approximately 4,000 to 8,000 angstrom. You know, 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 8 centimeter or 10 to the power minus 10 meter. And the product of these two is a constant. The wavelength and the frequency. Taranga draghya au abruti tar gunafala hochi velocity. Ei tarangar bega, the velocity of the wave, electromagnetic wave. And if it is light, it is c, which is 3 into 10 to the power 8 meter per second. But that is in air or vacuum. But if it changes its medium, supposing it goes from air or vacuum to water, it slows down. It slows down because water is an optically denser medium. I'll talk about that later. So when it goes from a rarer medium to a denser medium, it bends. It bends towards the normal, and that property is called refraction. Now see, even the 7 colors that you know, Baghoniso Honala, they travel with the same velocity. They only differ in their wavelength and hence frequency. So in a particular medium, nu is equal to c by lambda. This is a constant in a particular medium, in a fixed medium, or say air, say vacuum. So if you compare between different monochromatic radiations, monochromatic money consisting only one wavelength. No, there are infinite number of waves in between this range. If you select a single wave having say 5,890 angstrom, that falls in the yellow region. That falls in the yellow region. That is called a monochromatic wave radiation.
infinite number of waves. But if you take only one, now you must not be knowing. Sometimes the instructor intimidates the audience by saying, you must be knowing, so that the audience gets intimidated. So I'm saying the opposite way. You must not be knowing. Not deliberately to encourage you, but I think so. You must not be knowing that when you take sodium chloride, your common salt, and put it in the flame, or even sodium vapor lamp, sodium vapor, or you take sodium chloride from your mom's kitchen, put it in a tong and show it to the flame, you will find golden yellow color. You will get golden yellow color, very, very persistent. It will last very long. And if you pass that yellow flame through a prism in a dark room, you will find that it will disperse into only two monochromatic lines. The first line is called D1 line. So this is the D1 line of sodium, and the other one is 5896 angstrom. That is called the D2 line. These are the only two monochromatic radiations come out, are emitted when sodium or sodium chloride or sodium compound is heated in a flame. And you will know later why, when the electron goes to the excited state and returns back, why the energy difference is matching with the yellow energy, having wavelength 5,900, 5,890, and the other one that you will know later. But these are called monochromatic radiations containing only single wavelength, and the velocity remains constant. But the moment when light travels from one medium to other medium, obliquely, it bends. Is bending ta ko kahti refraction. The frequency remains constant. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ light monochromatic light କଥା ଭାବ କି polychromatic light ଭାବ containing ବାଘନି ସହ ନାଲା ପଶିଲା air ରୁ ପଶିଲା ଗୋଟେ glass ଭିତରେ ସେ bend ହେଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ bend ହେଲା ତା ଭିତରକୁ ପଶିଲା ସେ ସମୟରେ frequency ଦର change ହେଲାନି ତାର velocity change ହେଇଗଲା. The moment it leaves one medium and goes to another medium for some time, then its frequency remains constant and its velocity changes according to its wavelength. And you know, the product of these two is velocity. I'm not writing C because it has changed the medium from air to glass or to water. Therefore, in general, I'm writing V. It's not same as 3 into 10 to the 8 meter per second. It will be less. So here, this will be constant. So V will be directly proportional to lambda. So out of, hello, anyone watching from the YouTube, say hi to me. Anyone watching live in the YouTube? Not yet. Hello. Okay. Now what happens when it enters into water or glass?
its velocity changes according to its wavelength. And between Baghani Honala, this has the lowest wavelength. This has the highest wavelength. This is in the order of increasing wavelength. Hello, Suchitra. ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଖୋଜିଲିଣି ସୌଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଖୋଜିଲିଣି ତମେ କିଛି ହାଏ କରୁନ କିଛି କରୁନ ମତେ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ମିଳୁନି. So I am desperately searching you guys. So now I'm happy that at least Suchitra and Saubhagya, they are watching. And you please pick up a pen and paper. So I'll be doing a lot of things. Ebe explanation part achi. So khali suno. Now out of these Baghani Honala, violet has the lowest wavelength. And therefore it has the lowest velocity. Red has the highest wavelength. So red has the highest velocity. So therefore you might have marked when white light passes through a prism. So it got dispersed into 7 colors, Baghani Honala. So Bagho, mane baigini. That means violet, is bent to the maximum because its velocity inside becomes less. So it bends more. And although it comes out, it suffers another refraction. So it bends the maximum because its wavelength is minimum, velocity is minimum. So this one, red, travels faster and doesn't bend more. And this travels slower, so that a bending inside becomes more and spends more time inside, and therefore it falls at the bottom. Hello, Sarthak Mahapatra, good morning. I am Sonali Mahapatra. Oh, Sonali, good morning. Listen to me very. Now, to identify a particular medium, a constant term is associated. Ute madhyamaku aloko sangre se kemti interact karuchi, kette bend karuchi compared to air. Air is our standard. Air or vacuum, pakapaki. Air or vacuum mitre. Difference is in the 4th place of decimal. It a 1 hele. It a 1.00039, something like that. So we treat for all practical purposes. The standard is air or vacuum having refractive index 1, and ta tulonare relatively onyo medium like kacho, like pani, kete denser mane mass density nuhe, optical density, alokyo ghanatva, alokyo ghana kimba alokyo birala, optically dense ki optically rarer. Seta depend karibo taro refractive index. And samastankara, other than air, vacuum, samastankara refractive index ekru adhika. So let us first define what is the absolute refractive index. Jekonosi medium ro. Say C by V. C ta to hero na. C is the highest velocity that ever can happen, and no one can travel more speedily than light. So therefore, this N has to be greater. If it is air, then it is approximately C. So N is equal to 1 approximately for air. But for glass, for water, for diamond, any other medium, transparent medium, I tell you, the medium has to be transparent, not the opaque one where silver
mirroring, silver coating, that is for reflection purpose, making the last surface opaque. But here we take transparent medium so that light can transmitted, of course, after refraction. After refraction, so it is transmitted out of that medium, right? So write down in your copy, refractive index is eta. This is looking like n, but actually this is eta. Like this. Refractive index, absolute refractive index is C by V. C टा कौन अल्प अल्प लेख बेसी लेखनी C by V. C टा होची velocity of light which is fixed eta, and V depends on the medium. जोटा बहुत डेंसर मीडियम V टा बहुत कमी जीवो. So इटा टा एक रु बहुत अधिक है जीवो 2 3. So इतनी लिख दियो. That is the definition of refractive index of a medium. Absolute, but हमें यदि तबे जेहेतु c at the constant and velocity is directly proportional to lambda, we already know c constant, v is directly proportional to lambda, so eta is also inversely proportional to lambda. Right? So eta is inversely proportional to wavelength. That means even even among every individual monochromatic radiation has different refractive index for the glass. Glass has a different refractive index for violet light, different for yellow light, different for red light, because it's not a monochromatic, it is polychromatic. So since the wavelength is minimum for violet, so the refractive index for the same glass or same water medium may be same, but if the wavelength varies, then refractive index also varies in an inverse manner. And that happens when you change the medium. I have told you when a medium changes, light travels to a different medium from air to water to glass, then only V is proportional to lambda. Frequency remains constant, right? V is proportional to lambda, and this is here V. C taku kehi challenge kari paribani. No one on earth can challenge C. About 7 years before, a group of scientists in Switzerland and in the vicinity, they claimed that they have found some neutrinos. If you do not know what are neutrinos, you watch my several videos on particle physics. Neutrinos. So they performed experiment from one mountain top to the other mountain top, a large distance between the two mountains in the European Alps mountain range, and they proved that neutrinos in some cases travel faster than light, little faster. They had calculated it is light is 2.99
this to be true. Then several groups, they started performing the experiment and proving that what they are claiming is simply a miscalculation. Ultimately, within 6 months, they withdrew, they apologized, क्षमा भिक्षा कले जे नाई आमर एक्सपेरिमेंट ठीक थिला किंतु आमर कैलकुलेशन भूल थिला. We are sorry for misleading the community. So आज पर्यंत केही light velocity रो अधिका light को थरे air रे. When I say light, I mean in air or vacuum, but ସେଇଟା भी change ही जाउची पानी भीतर पसले. So now see, भिन्न भिन्न medium मन करो refractive index alga alga. For example, diamond who's air tharu 2.419 denser, gallium phosphide 3.5. Eta hoche solid. Eta hoche liquid. Water is 1.33. Glycerine. देखो इसे लिखा ही नहीं kerosene. Kerosene is lighter than water. तार mass density टा water to come, it will float. किंतु आलोकीय घनत्व ताठू अधिका. केरोसिन भितरे लाइट पास कले अधिका बेंडिंग करियो. So mass density संगरे optical density रो किसी संपर्क नहीं. The optical density don't confuse with mass density. Larger refractive index माने बेसी बेंडिंग हवो. now देखो ए चित्रटी तमे संगे संग कर देई परिबो फटाफट. एटा हला इंसिडेंट रे आमे काली करथले एटा रिफ्लेक्टेड हे जिवो. एठी रिफ्लेक्शन नाही. एठी ता भितर पसिबो. एटा ट्रांसपेरेंट मीडियम स्वच्छ ता भितर पसिबो. जेहेतु एटा एयर रेयर और मीडियम डेंसर मीडियम को गले अभिलंब आडकू पाखी आसीबो. It will bend towards the normal. So जेमती रिफ्लेक्शन रो नियम थिला सेमती this normal incident ray and the refracted ray प्रतिश्रुत रश्मि एवं आपतन रश्मि एवं अभिलंब से माने गोटे प्लेन रे रहिबे. एवं आई होची एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण, आर होची एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. डाउची प्रतिसरण कोण डा फटकिन कर दियो निश्चय बेंड हे. जो उल्टाटा हबो जदि गोटे माछ अछि भितरे पानी भितरे ताकू तमे देखुच माने धर मु निर्जरा को देखुची माने मु लाइट कोठू ता घरू बार लाइट हो कि कोठी हो आजकल तो एलईडी लाइट आसलानी तार सोनाली ता घर बार लाइट रु लाइट जाय करी ता मुहरे पडुची. ता मुहरु रिफ्लेक्शन हे करी ए रिफ्लेक्शन काली मु आखिरे पडुची रेटिना भितरे. ब्रेन ताकू कहूची जे एटा होची निर्जरा आयुता. तो सेतपे तोरा माछटे एठी अछि तुमे एठी देखुचो तेणु लाइट जो पडुची माछ ऊपर सेठू उल्टा जीवो आसिकरी जेतबेले डेंसर मीडियम रु रेयर मीडियम जीवो it will bend away from the normal. ठीक उल्टा का यार ठीक उल्टा तीरटा को उल्टे दबो. एटा कहि साइलेनी ए जिंसटा होची स्नेल्स लॉ इज वेरी इंपोर्टेंट. यू हैव टू रिमेंबर. एइथरे तुमको मु घणा पेले भी परीक्षा रे पेले थिली आर्थरक and you will be surprised to find that मु जतेबेले क्वेश्चन टाकू पकई के देली जने कॉलेज टीचर को पचारली पिला माने कोन समस्ते यूनिफॉर्मली कहउछन्ती भूल हे जिबिली. एटा कोन सी हठात करी से सार मध्य कहले हां सर पिला ठीक कहउछ. ए कहले केमिस्ट्री लोक तो केमिस्ट्री लोक गोटे कम से आउ भीतर को पसिना जे when I talk something
I talk with a lot of study, lot of experience. Because I told you that physics is my hobby, my passion. Chemistry is my profession. Mathematics I like very much. So ultimately ମୁଁ ତାଙ୍କୁ phone କଲି, phone କରିକି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି डायमंड रू वाटर को गला, वाटर रू डायमंड को आसिला। ମୁଁ ଦେଖିବି ସେ क्वेश्चन टा ଆଉ ଟିକେ ପରେ ସେଠୁ ବୁଝିଗଲେ ସରି 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 सर ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏଇଟା yes sir you are correct. So ସେଥିପାଇଁ ଆମେ अंडरस्टैंडिंग ଟାକୁ ଠିକ କଲେ ଆଉ ଭୁଲ ହବାର ନାହିଁ। ଏ ଘୋଷା ଭଳିଆ କରିଦେଲେ କଣ ହବ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା रेशियोटा हला रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपेक्षिक प्रतिसरणांक ए दीटा जे कोनोसी मीडियम भितरे तुमे कंपेयर करिवो डायमंड वाटर पाखा पाखी लागि गिर अछंती गोटे आलोक रश्मि डायमंड रु बाहरी करी पानी भीतर पसला कि पानी रु बाहरी करी डायमंड रे पसला कि केरोसिन रु बाहरी करी पानी रे पसला पानी रु बाहरी करी एयर रे पसला एनी टू sin I by sin R I टा रहिबो कोठी ना फर्स्ट मीडियम रे जोठू आसिला सेटा I R टा कोठी ना जोठी गला सेकंड मीडियम किंतु N2 ए सेकंड मीडियम रो एटा होची एब्सोल्यूट C by V जोटा एब्सोल्यूट प्रतिसरणांक by N1 फर्स्ट मीडियम रो जोठी I अछि तारो एब्सोल्यूट प्रतिसरणांक सो sin I by sin R is equal to N2 by N1 सेटा भलो कि बुझिया पड़िबो I टा कोठी अछि फर्स्ट मीडियम रे जो ठारू आसिला लाइट तारो प्रतिसरणांक जेठी धरम मन भाबो एटा एयर रो आसिला एयर एटा 1 एटा 1 नहीं जो हम वैक्यूम संगरे वैक्यूम टाको 1 ने आइची वैक्यूम सा एयर पाखा पाखी समान 1 तेणु N2 डायमंड 2.5 so definitely एटा आर 2.5 by 1 माने 2.5 किंतु जदि डायमंड रु पानी को जीवो पानी रु डायमंड को जीवो टिके पर सपोर्ट हे जीवो तार पानी रु लाइट टा आसिला पानी रु तो आई टा पानी रे अछि डायमंड रे अछि आर टा सो पानी रे जो अछि आई टा तार एठी आसीबो तळे पानी रो एब्सोल्यूट प्रतिसरणांक एठी आसीबो एवं जो भितर को गला डायमंड भितर को गला तार प्रतिसरणांक एठी आसीबो सो इटा हला रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ताको कहंती इट इज N21 it is the refractive index of 2 relative to 1 actually हमें 2 को जागे सिर्फ 2 लिखो जे it is the relative refracting index of medium 2 with respect to medium 1 एटा टी लिखि दियो खाली फार्मूला टा N21 एटा स्नेल्स लॉ मु तो फाइल टा देबी ना हेला सुचित्रा सार्थक आर यू लिसनिंग ना नहीं सुइलणी सकाळ सकाळ उठिकी सुचित्रा आर यू लिसनिंग देवी दत्त गुड आफ्टरनून I am just kidding. You joined late, but better late than never. N21 2 जोटा आग अछि सेटा रहइबो ऊपर तार एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जोटा पछरे अछि सेटा तळे रहइबो किंतु मते कहले देखिबा तमर तो अनम्यूट करिया पई पावर अछि तो कहलो को मीडियम को लाइट आसीबो
N21 ର ଅର୍ଥ ହବ କୋଉ ମିଡିୟମ ରୁ କୋଉ ମିଡିୟମ କୁ ଲାଇଟ ଆସିବ। ହାତ ଟେକ। Sir, one. ହଁ ଓମ୍ କୁହ। Sir, N1 ରୁ 2 କୁ ଆସିବ। ୟେସ୍ N1 ରୁ N2 ୟେସ୍ ଯୋଉଟା ପଛରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଠାରୁ ଆସିବ। ଆଇଟା ଏଇଠି ଅଛି, ଆର୍ ଟା ଆଙ୍ଗଲ ଅଫ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ ଟା 2 ରେ ଅଛି। ତ ସେଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ନାଉ ଦେଖ ଆମେ ଯଦି N21 ନବା, N2 ଟା ହଉଛି absolute C light of velocity in air or vacuum by V2, N1 C by V1, so C कटिगला V1 टा ऊपर उड़िया मारला, so velocity अनुसार 1 by 2 V1 by V2, V1 धर air अधिका सबुठु, तो definitely V2 टा कम, तेणु N21 टा 1 रु अधिका। किंतु रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रे N2 by N1, वेलोसिटी रे V1 by V2, किंतु लेखा हबो सबले N21 जोठी की भितर को पसिबो सेटा आगो लेखा हबो, जो ठारू आसीबो सेटा पछरे लेखा हबो, एवं वेलोसिटी वाइज एटा आगो आसीबो 1 तापर 2, किंतु रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाइज आगो आसीबो N2 N1 हैला। अच्छा 1 रु 2 को आसीबो, 1 रु 2 को उल्टे देली मु, वर्तमान 2 रु आसीबो 1 को, जळ रु यार 1 2 लिखिला माने ए सेकंड टा होची जो ठारू आसीबो, से 2 भावनी 2 माने सब बेले ता भीतर को जीवो। आमे गुटे मीडियम रो ना देइछु 1, गुटे मीडियम रो ना देइछु 2, नाटा दे देइछु, किंतु एई ऑर्डर टा होची इंपोर्टेंट। 1 2 माने 2 रु पानी भितरु माछ देहरे रिफ्लेक्शन करिकरी पानी रु एयर को आसीबो, सेट रिफ्लेक्शन हबो इंटरफेस रे। सो इटा हला N1 जो ठिको आसीबो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन N1 रे अछि एयर रे बाय N2 और उल्टी जीवो V2 by V1 हे जीवो। Therefore N21 is equal to the reciprocal of eta, N to no eta 1 2. I hope it's all clear. Raise your hands. Okay. आमे अंक कॉलेज आनी परिवा, किंतु जदि फास्ट मीडियम टा एयर हबो, मु सिना से बदमाशी करबा पई मु एयर नेलिनी, मु डायमंड आउ वाटर भितरे ये कली क्वेश्चन कली, तेणु N2 N1 दीटा को आसीबो, किंतु जदि एयर गोटे मीडियम रहिबो, एयर रु जीवो N1 टा जदि माने एयर रु लाइट आसीबो ताले N1 टा 1 हे जिबा अप्रोक्सीमेटली 1, एयर और वैक्यूम पाखा पाखी समान 1, तेणु ए पर्टिकुलर मीडियम रो sin I by sin R टा N2 हे जिवो जदि से मीडियम को एयर रु बा वैक्यूम रु लाइट एंटर करिवो, किंतु सब बेले तो वैक्यूम बा एयर रु एंटर करूनी, वो तो वाटर रु जाई करी डायमंड भीतर पसी पारे, से पे N2 by N1 इज वेरी इंपोर्टेंट। इटा को ध्यान पिला पई, कारण सब बेले हम बाबू एयर रु जाई करी पसिबो किंबा पानी रे, किंतु किंबा पानी रु ऊपर को आसीबो, पानी रु ऊपर को आसिले आईटा रही जीवो पानी भितरे, आटा रही जीवो बाहर एयर रे, तो सेठी कोन हे जीवो Sir, 1 by N2 is ऑब्वियसली 1 by N2 हे जीवो, उल्टी जीवो ऑब्वियसली उल्टी जीवो। अंक करिवा देखो गोटे इंपोर्टेंट जिंस, जदि गोटे कोनोसी रे, व्हेन आई से रे आई मीन मोनोक्रोमैटिक, परपेंडिकुलर पड़िबो जदि गोटे सरफेस ऊपर, परपेंडिकुलर जदि पड़िबो गोटे एयर N2
So जदि angle of incidence टा 0 हला ताले undoubtedly angle r टा मध्य refraction टा भी 0 होबो कारण n2 टा केबे 0 नुई n2 टा नॉन 0 सुति पई सीधा पळेबो अंडो की था जेमते रे ट्रेसिंग हमें कले सेमती एठी मध्य रे ट्रेसिंग करिवा to find out the position of the image. Already I have told you optically denser medium jaro refractive index अधिका जार refractive index कम relatively सबुठु कम तो vacuum रो 1 air रो किंतु relatively जोटा कम सेटा को air or medium. Kerosene is a optically denser medium than water. एतरे bending अधिका होबो air रो light गले. This you know. एठी एठु जदि ए अछि कि माछ अछि कि एठी अभिप्सा बुडी कि अछि से बुडी कि रहि पारे अभिप्सा मंत ताकु मु देखुची एठी तो अभिप्सा ना करू लाइट जाइकरी एठी रिफ्रैक्शन होची when light comes from a denser medium माने optically denser medium to a rarer medium it bends away from the normal ए पटे गला then मु देखिबी तार गुटे virtual image एठी if you extrapolate परिवर्धित करिवो जदी मु एठी देखिबी से किंतु एठी अछि मु देखिबी एठी तेणु इट हला apparent depth इट हला actual depth से एति तळे अछि actually किंतु मु देखिबी मु आखी सिद्धारे मु देखिबी आलोको स्ट्रेट लाइन रे जाए तेणु मु ताकू देखिबी तार गोटे इमेज देखिबी दैट इज अ वर्चुअल इमेज एठी देखिबी सेति पई तमे देखिछ जे कोन से गोटे पेंसिल टाकू कोन जे कोस्ट पानी भितर पुरे देले से टिके उठी रेज्ड देखा जाए रेज्ड उठी गला भले देखा जाए तो एटा हस तार एक्चुअल डेप्थ रियल डेप्थ एटा हस अपरेंट डेप्थ कारण प्रति पॉइंट रो दीटा नै जीवो एमती गला ये दीटा पॉइंट को जते बेले एक्सट्रापोलेट करिवो टुवर्ड्स पानी इट विल टच ए पॉइंट सेही पॉइंट रे देखिवो एक्चुअली वर्चुअल एई पॉइंट को तनो सब गुडा को पॉइंट सेमते रेज हेई गले एई पोर्शन टा उठी गला भले लागिवो तो देखिवो किंतु प्रकृति रे हाथ मार तम हाथ पुरेबो लागिवो जदी एठी अछि पाखरे अछि किंतु हाथ बाजीबोनी पेंसिल बहुत तळे अछि अच्छा द इंटरेस्टिंग जिंस देखो इंटरेस्टिंग जिंस हला गोटे गोटे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब आयताकार काच स्लैब अछि तमे गोटे रे एठी आसिला थरे एठी बेंडिंग हला ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इट इज बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल 60 डिग्री 60 को मारो बोली हमें कैलकुलेट करके बाहर करछु डजंट मैटर बिकॉज़ ग्लास रो n2 टा हमें जानिछु सेटा पुट करके एंगल बाहर करछो ताको मारो बोली आसला एटा कभी होला पुणी जते बेले उल्टाटा हला ग्लास रो तले पुणी आउथरे बाहरला से पुणी एका एंगल रे बाहरला सो ए आई एटा आर हेले एटा भी आर मु लिखिछि आर किंतु एक्चुअली एटा आई एटा एंगल ऑफ इंसिडेंस because light is going from glass to air so the interface ray it has angle of incidence it has angle of refraction for this interface right so it r dash it angle of refraction जाने के मु r dash नहीं छि एटी i लिखिलिनी कारण एटा corresponding angle तेणु r r समान एटी i लिखि थांदी किंतु r i न लिखि r लिखले सो ए दीटा ए प्रथम आई এবং দ্বিতীয় অজা অজা কুজম angle of refraction they are same ते प्रमाण करछि देखि दबो टिके ट्रिग्नोमेट्रिकली प्रमाण कर देछि तब देखि दबो तनु ए लाइट जाउछि एटा गोटे ग्लास स्लैब ए तार थिकनेस हो जेति की हां
सो ग्लास टा सीधा जीवा कथा ग्लास टा सीधा जीवा कथा किंतु एटी थरे बेंड कला नॉर्मल टा एटा बेंड कला पुणी आउ थरे बाहर को बेंड कला सो दैट ए दीटा पैरेलल यार इंसिडेंस एंगल जोड़ा यार रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एपटे जहा यार एंगल ऑफ इंसिडेंस सैया so therefore they are parallel and there is a slight displacement. This is called lateral displacement. A theta parallel ray could take thin glass slab रे जेतेबेले जीवो सेतेबेले ए रे जदियो parallel angle theta को जदियो समान किंतु टिके डिस्प्लेस्ड हे जीवो किंतु जदि तमे थिकनेस टाको छोटो कर दबो बहुत थिन कर दबो ए डिस्प्लेसमेंट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. Remember this. If the thickness of the slab आयताकार slab rectangular slab टाको बहुत thin कर दबो then a incident light and final refracted light तो भीतर जो lateral displacement जो हुए एपटे उतरा टिके एमती बाहरियो सेटा पूरा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हबो. ठीक चलछि कि नाही सुचित्रा? सुचित्रा हाय सुचित्रा सार्थक ठीक चलछि ए सार्थक कुछ सोनाली ठीक चलछि सुबुची my voice is still not resumed normal. अच्छा तो मन कर चलछि जूम हाथ टिकलो ठीक चलछि वेरी गुड hands down एक बार एटा तमर कोर्स रे नाही मु एटा लिखि देछि केते लैटरल डिस्प्लेसमेंट हबो सेटा डिपेंड करछि थिकनेस ऊपर टी होछि थिकनेस आर होछि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एटी प्रथम which is also same as the angle of incidence here dutya. So this r cos r into sin I minus r, so this will be almost zero when the thickness t will be reduced very small, then this will vanish to zero. Remember this parshviya visthapana कहते lateral displacement or shift सेटा थिकनेस ऊपर डिपेंड करे थिकनेस टाको छोटो कर देले ऑलमोस्ट सीधा गला भले लागिवो सीधा सेति पई मु कहितली जे पेंसिल और अन्य जिंस को देखे कहितली जे जो जगह रे प्रकृति रे अछि से जगह रे देखा जीवनी तुमको देखा जीवो टिके ऊपर उठी गला भलिया तो एटा हला रियल डेप्थ एटा हला अपरेंट डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर तापे गोटे फॉर्मूला अछि तार डेरिवेशन कर देछि तमे पछरे देखियो वेरी सिंपल डेरिवेशन हाउ टू नो अपरेंट डेप्थ इज r by ndr सब बेले रेयर और मीडियम एयर रु जाउछि पानी भीतर को ndr so a होछि अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ by ndr d होचे डेंसर मीडियम आर होचे रेयर और मीडियम पानी एटा ये त माने जेहेतु रेयर और मीडियम टा 1 तनो वर्चुअली एटा nd कारण nd by nr ndr माने nd by nr टा 1 सो वर्चुअली nd सो जदि रेयर और मीडियम टा एयर हबो ताले अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू द रियल डेप्थ बाय इट्स ए डेंसर मीडियम रो absolute refractive index जो टेबल रे तमे देखिलो यार डेरिवेशन टा तमे देखि दबो अंक आसी वाला अंक तुमे एटा निजे करिवो कोन मु देइची जे गुटे टॉप रे टैंक रे 12.5 सेंटीमीटर पानी थिला ए हाइट जके पानी थिला तळु ऊपर जके
गोटे निडल गोटे छुंची तले पड़ी ताकू माइक्रोस्कोप रे देखिकरी जना पड़ला से अच्छी 9.4 सेंटीमीटर तार apparent depth माने तळु नुहे apparent depth real depth होची ऊपर सरफेस रु एटा ऊपर सरफेस रु तळ जाके real depth bottom of the tank रे से अच्छी किंतु apparent depth माइक्रोस्कोप रे देखिला से लागिला ताको 9.4 सेंटीमीटर तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें जानि छे जे वाटर टा होची डेंसर मीडियम एटा जदी nd is equal to r by a nd टा को एपट को नहीं गले r by a so nw is equal to r by a real depth apparent depth so एटा मध्ये हमें जानि गले एटा मैं टेबल रे भी देखि छे जे वाटर रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अबाउट 1.33 पाई गले पुनी पचार जी वाटर जगह रे जदी गोटे आ गोटे लिक्विड ऑयल कि कोन भर्ती कराला सेम हाइट पर्यंत एवं तार absolute refractive index which is 1.63 by what distance would the microscope have to move to focus the needle again अच्छा जदी बर्तन एटा 1.63 हे गला it's not water to 1.33 1.63 तेल पेल कोन नेलो गोटे केरोसिन तेल कि कोन नेलो तणु apparent depth चेंज हे गला real depth सब बेले कांस्टेंट apparent depth आसी गला एतिकी आगरु apparent माने माइक्रोस्कोप टा फोकस हेतला 9.4 से जगह रे तणु ए apparent depth टा आउरी ऊपर उठी गला माने सरफेस रु तळ को 9.4 रे ताको देखा होतला सेठी से माइक्रोस्कोप टा को सेट करछि तो वर्तमान केते ऊपर को उठेक पड़ियो माइक्रोस्कोप टू बी मूव्ड अप बाय एतिकी उठेले से 7.67 सेंटीमीटर रे apparent depth रे से देखि पारिबो total internal reflection it's very interesting very interesting hello साई कोन तमे सेठी तुमे कोन हम पाखरे ना साई तुमे कोन दूर रे प्रणाम साई तुमे ते दूर रे कोन तुमे तो पाख पिला डोंट वरी आमे दूर पाख एका ट्रीटमेंट करू तुमे सुनो खाता कलम धरि कि सुनो ओडा को सब लिखिबो एटा बहुत बड़टा अछि बोली आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ द पावर पॉइंट तुमे सब भलो पिला अंक कर देले अंकटा जदी कर दबो तमरो हम खाता रे लिखिबो सब मु जहा लिखिछि सबुडा खाता रे लिखिबो देखो जदि तुम गोटे लाइट टा पानी रु आसुची एयर को डेंसर मीडियम रु रेयर मीडियम को आसुची सेते बेले से इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल सो इट हला आर इट आई को जते बढ़ीबो धीरे धीरे बढ़ेले अकॉर्डिंगली आर टा भी बढ़ीबो सो एमिति गोटे आई आसीबो जते बेले कि आर टा हबो 90 डिग्री पानी सरफेस रे द रिफ्रैक्टेड रेट आजीबो सो एई एंगल को कहते क्रिटिकल एंगल चरम कोण क्रिटिकल एंगल ताहाटू टिके जदी बढ़े दबो टिके तबे आउ लाइट टा रेयर और मीडियम को न जाय करी जो मीडियम रु आस्तला सेही डेंसर मीडियम को बैक करिवो एंड इट विल फॉलो the laws of reflection I is equal to r माने इटा refracted more than reflected is इटा it so actually इटा refraction होची so ए phenomenon को कहती total internal reflection phenomenon is refraction but actually happening होची reflection only when the angle of incidence exceeds critical angle केमति पाइबा IC तले IC डा बाहर जीवो if sin IC is n1 by n2
if sin IC is equal to n1 by n2 तो IC टा एंगल टा जाना पड़ जिवो सेठू ताठू टिके अधिका नेले n1 टा तो 1 तो 1 by n2 नेले हमें जाना पड़ जिवो से टिके एंगल ठू अधिका जदी हमें कौन सी ये करबा जिंस रखिबा हमें देखिबा सही अनुसार तेबे हम लाइट को देखि परिबानी बाहर कहीं ना से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से भीतर को पस जाउची आ बाहर को बाहरुनी सो इट जाना पड़ुची जे क्रिटिकल एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम माने धरो डायमंड जार 2 पॉइंट समथिंग तार क्रिटिकल एंगल कम अल्प टिके नॉर्मल रो अल्प टिके एंगल हे गले तार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आरंभ हो जिवो whereas water रे जेहेतु इटा 1.33 तेणु तार एंगल टा अधिका जेहेतु इटा 2 पॉइंट समथिंग डायमंड रो तेणु आईसी टा कम सेति पई डायमंड रे चकचक देखा जाए कोन पई डायमंड भितरे पसी गले लाइट से बाहर बा डिफिकल्ट एमती पड़थो ए सरफेस रे पूरी टोटल इंटरनल ए सरफेस रे पूरी टोटल इंटरनल सो लाइट इट ग्लिटर्स चकचक देखा जाए ग्लिटरिंग इज ड्यू टू थाउजेंड्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक प्रतिफलन आंतरिक नई कि आभ्यंतरण करथिले भलो होता अभ्यंतरण गुरुजी गुरुजी हैला ये किछ नहीं ये लेंस को हमें जीवा स्फेरिकल लेंस ठीक जदि भीतर पटटा चेपाई थिवो कॉनकेव साधारण रे को कॉनकेव कहंती किंतु एटा बाय कॉनकेव ए पट भी चेपा से पट भी चेपा जदि मझी पर्सनटा मोटा हिथिवो ताले बाय कॉन्वेक्स ताको साधारण रे कॉन्वेक्स को किंतु ए दी प्रकार अछि जोटा विशेष तमरो दरकार होबनी गोटे पट फ्लैट गोटे पट चेपटा प्लानो कॉनकेव आटा होची प्लानो कॉन्वेक्स गोटे पटे प्लेन गोटे पटे मोटा सो ए दुईटा में नबा दी प्रकार रो एटा होची कॉनकेव एटा होची कॉन्वेक्स सेतरे जेमति कॉनकेव मिरर टा हीरो मार्का थिला तार गुडे पॉसिबिलिटी थिला एठी उल्टाटा कारण एठी एटा हला कन्वर्जिंग लेंस मिरर रे कॉनकेव मिरर वाज अ कन्वर्जिंग मिरर and convex mirror was a divergent mirror concave mirror was a divergent mirror a convex mirror was a divergent mirror but ulta tate iti light gale iti focus he padibo really me sushti karibo so it is converging while the concave lens is diverging lens ठीक उल्टा था ए क्वेश्चन टा पकेइतली छाड़ो एटा डिस्कस करथली देखो आमर दीटा रे डायग्राम दरकार दीटा तीनटा ले अधिकंतु 9 दोसाय टिके भलो करी बुझ सब बेले लाइन बाय रूल ऑप्टिक्स रो रूल हला तमे प्रिंसिपल एक्सिस एटा होची ऑप्टिकल सेंटर सब ओडिया लिखिसु डोंट वरी ओडिया वाला कांदो नहीं ओडिया वाला कांदो रे ओडिया वाला कांदो रे सब ओडिया रे लिखिसी अच्छा एटा हला ऑप्टिकल सेंटर आउ प्रिंसिपल एक्सिस एका भलिया हमें सब बेले प्रिज्यूम करबा एटा एते थीन ए मोटा हेले भी परसेंट एते थीन जे इति डबल रिफ्रैक्शन होनी नॉट लाइक ए प्रिज्म भाबिबा जे रिफ्रैक्शन इज हैपनिंग वंस एंड एट दिस वर्टिकल लाइन एट द मिडल that we have to presume it is thin and although in reality two refractions are happening but we take only one refraction at the midpoint that is the vertical line now left side रे सब बडे हमें ऑब्जेक्ट रखिबा
तेणु जदि ऑब्जेक्ट रो लाइट आसिक पड़ो फोकस हम ये F2 रे सो रियल फोकस टा F2 मन रखता फोकस कहले F2 को बुझाए जो फोकस्ड हुए किंबा जो which appears to have come from so इटा convex lens रो F2 एवं तार से आर पटे F1 ना सेटा न कले ए OF2 जहा OF1 स न कले हम ऑब्जेक्ट जदि आर ऊपर रखिबा तेणु आ गोटे F1 करबा एपटे भी जे एपटू लाइट आसीबो एपटे पडिबो किंतु आमे अंक कला बेले बाय डिफॉल्ट बां पट रखिबा ऑब्जेक्ट को तेणु F2 टा is the real focus for अंक F1 is required because एठी हमें ऑब्जेक्ट को भी रखि पारिबा सेमती इन द concave lens एठी आज पड़ी करी एठी डाइवर्जेंट हे जीवो ए पॉइंट रे रिफ्रैक्शन ले it will be like this parallel रे एठी पड़िले मझी पॉइंट रे एपट हे जीवो ताको एक्सट्रापोलेट कले एटा होच तार रियल फोकस F2 not real focus virtual focus but focus कहले F2 को बुझाए I'm not talking of real and virtual it is the focus हमें तो कहबा focus F2 टा so the light is appear to have come from this point but आरो पटे रहिबो मध्य आ गुटे F1 so the light टा एपटू in the direction of F1 रासिला then से parallel जीवो it is in the direction of F1 रासिला तो से parallel जीवो so this is the point from which it appears the light is coming to the other side as if it is there all coming from this point so this is the focus and focus means this F1 is the first principal focus F2 the second principal focus and generally when we say focus of a lens we mean second principal focus F2 now lens got a power achi that is equal to 1 by f hochi focal length same a distance ta hochi f is high is here so 1 by f ta ko meter use kariya padibo meter नियम सेटा so power ro unit of meter inverse ताको कहते diopter d in optics meter inverse कहा जाए नहीं diopter कहा जाए अंक किंतु मीटर रे करा जाए convex रो positive power concave रो negative power by convention power is 1 by f convex ro power positive concave ro negative now ray tracing is not a big deal at all तुम्हें घरे खेलिबो न्यू चुटकी में जदि ऑब्जेक्ट अछि let us take first the convex lens which is hero here their concave mirror was hero so many places and in convex mirror wherever you take and the image will be coming between the vertex and the focus or pole and focus it is imaginary erect and small in size then tar kichi exactly ulta tati ho eti hero hochi convex lens tar all possibilities ame padiba kintu ta pai concave pai jout rakho it will have a particular type of image and we will list that now number 1 jodi object अछि infinite distance रे definitely सेठू आसिकरी focus रे so the image is a point image is a point size image it is a real image you can if sun rays are coming from infinite distance then you will find हम कौन करू पिला बेले गोटे लेंस आनिकरी एमती जगह रखू पत्रटे रखू पत्र एपट सेपट एमती करी एमती करिकी एमती जगह रखू जे पत्र जली जाए सुखिला पत्र होइथिबो से जली जीवो हम आखि आगे जली जीवो तुम के करिछ हाथ किलो लेंस बड़ लेंस गोटे अछि हमर थाए बापांकर थाए ताको आणु आनिकरी सुखिला पत्र आनिकरी
सूर्य किरण इनफाइनाइट डिस्टेंस रु आम से पत्र पाखापाखि एमती सेमती एमती ट्रायल एंड एरर रे एमती जगह रखू फोकस पॉइंट रे पड़ला पत्र पड़ला इतने कंसंट्रेटेड एनर्जी पड़ला माने चलला ओके ओके हैंड्स डाउन साई 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 नंदिनी शुणुच मते तमे किछि व्यस्त होनी मो थरे सोर थ्रोट हो गले टाइम लगे कष्ट होनी या पिकुलियर साउंड बाहर सुचित्रा रानी अच्छा ऋषिकेश ऋषिकेश कौन कहूँ ऋषिकेश पागलाटे खोलुଛୁ कहीं अच्छा देख जति ऑब्जेक्टा एटा F1 हेले एटी 2F1 एटी C नहीं एटी C पॉइंट नहीं एपटे एमती करके C सेमती नहीं यार तार डबलटा एटी 2F1 एपटे मध्य 2F2 राइट तेणु जदि ऑब्जेक्टा फाइनाइट डिस्टेंस रहिबो बट बियॉन्ड 2F1 देन गोटे रे नै जिबा parallel to the principal axis which will go through focus and आउटे कहबा को मु भूली जाई छी जे जो रेटा ऑप्टिकल सेंटर देख जीवो से सीधा जीवो के कहि परिबो काहे रेज योर हैंड्स के कहि परिबो जो रेटा ऑप्टिकल सेंटर बाटो देख जीवो सी सीधा जीवो आमे सिना जानथिले गोटे सरफेस ऊपर परपेंडिकुलर पड़िले से सीधा जीवो आई जहा आर से आ जीरो आलू किंतु किंतु एठी तो से नुहे ना एठी तो ऑब्लिकली आसुची किंतु सीधा जीवो ज्योतिरंजन को ज्योतिरंजन के कहबो ट्राई करो हाँ के गोटे ट्राई करो सुचित्रा ट्राई करो साई क्वेश्चन अरे बाबू जोटा पैरेलल गला प्रिंसिपल एक्सिस को सेटा फोकस बाटो दे गला F2 आउ गोटे रे नबो ऑप्टिकल सेंटर बाटो देकरी सेटा सीधा जीवो तार कोनोसी बेंडिंग हबने तार कोनोसी बेंडिंग हबने काहे की व्हाट इज द रीजन सेटा कहि देले आज तमे फास्ट हे जो यस आकांक्षा आकांक्षा बुझी कारण सेटा ही तार लंब दिक सेठी तार आपतुल्य कोणटा 0 आउथरे को बुझी कारण सेटा ही तार लंब दिक आ सेठी तार आपतुल्य कोणटा 0 हां हां तुम गां रे हेतिबो आकांक्षा प्रियदर्शिनी प्रधान तुम गां रे देखा जाउछि तो परपेंडिकुलर भलिया देखा जाउछि तो हइलो आकांक्षा समस्त को तू भुआ बुलाउछु देखा जाउछि परपेंडिकुलर भलिया एठी जदि मु गार पकेबी जाओ कहला मु भारी खुशी मु तो डिस्करेज करूनी हाथ तरला ए जो वर्टिकल लाइन को तुमको लागुची एटी परपेंडिकुलर अछि तेणु के कहयो को लेखिक दियो बाहर पिला लेखिक दियो भीतर पिला को ए पिला भी कोन कहले ना देबी तो नो 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 सर टिके चैट टा देखि दियंतु सर मते टिके बाहरियार अछि हां कोनटा चैट टा देखि दियंतु हां सर टिके चैट टा देखि दियंतु को चैट सर जूम रो हां सर एक्चुअली मते मो होटल रे चेकआउट अछि ना सर मते जिबार अछि तो सर मो आउटी क्लास अटेंड कर जाओ नो थैंक यू सॉरी सर गॉड ब्लेस यू के कहबो ओम 8 तो बरो 8 फेल मारलो देखो
ଏଟା ସିନା ଏଟା ମୋଟା ଦେଖା ଯାଉଛି Critical angle ସେଠି ହେଇଛି। କଣ କଣ Critical angle. ନା ନା ଏ ଦେଖ ଏଇ ମିଡଲ पोर्शन टाकू you treat it as an आयतक्षेत्र आयताकार ଏଇ middle portion ଟା is just like a thin rectangular slab, very very thin, and the lateral displacement is almost zero. से कथाटा बारंबार कहिथिली बोली एठी पचारिली फेलो मारिलो एटा सना कर्व हेची किंतु मिड पोर्शन टा इज लाइक अ वेरी थिन रेक्टेंगुलर स्लैब तो रेक्टेंगुलर स्लैब रे जे कोठी पसु टिके डिस्प्लेसमेंट हवा कथा पैरेलल जीवो डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इफ दिस इज थिन सेति पई मन रखो जे जोटा ऑप्टिकल सेंटर बाटो देकी जीवो से सीधा जीवो तणु ए रेटा ठीक आसला ए रेटा एठी सो ए पॉइंट हला ए मुंडो गछर मुंडो ताको ड्रॉप कर देले परपेंडिकुलर सो द इमेज विल लाई बिटवीन f2 and 2f2 लिखा है सो नदी beyond 2f1 रे जो रहिला ऑब्जेक्ट देन इमेज पड़ियो बिटवीन f2 and 2f2 सेम थी जदी एग्जैक्टली 2f1 रे रहिला ऑब्जेक्ट ता exactly what is the nature of the image oh बुलियली smaller and real जोटा को तमे पर्दा रे धरि परिवो किबा देखि परिवो एठी आइ देखि परिवो रियल धरि परिवो इन्वर्टेड एंड स्मॉलर अच्छा जदि 2f1 रे पडिवो तले गुटे सीधा गला पैरेलल से फोकस बाटो दे गला आ गुटे ऑप्टिकल सेंटर सीधा गला से देखिबो एक्जेक्टली पडिवो 2f2 रे जोटा 2f1 रे ठिया हबो से 2f2 रे किंतु इन्वर्टेड सेम साइज इन्वर्टेड अच्छा जदि बिटवीन f1 and 2f1 रे पडिवो जोटा सीधा गला सेटा फोकस बाटो दे जीवो ऑप्टिकल सेंटर तो बढ़े देले से बियॉन्ड 2f2 पडिवो इन्वर्टेड एनलार्ज्ड एंड रियल ताको धरि परिवो ए केसटा जले मु डिस्कस करथिली मु मते गोटे बढ़िया क्वेश्चन देवी दत्त ब्रह्मा पचारथिले तो सेटा मु तरतर रे ठीकरी ताकू जवाब देई पार नथली उत्तर से सिचुएशन एटा आसिला बोली I will rectify the answer I gave yesterday, Mr. Brahma, if you are listening. The focus f1 ऊपर ठिया हबो ताले एटा फोकस बाटो दे जीवो एवं एटा सीधा जीवो so they will never meet, they are parallel rays so it will be a infinitely large real image but it will appear at the infinity किंतु जदि एटा देखिबो a small part you can see किंतु जदि एपट साइड रे देखिबो in the side where the object is there it देखिबो then it will appear as if it is coming from the opposite side you will get a virtual image coming from this side and in fact virtual image टा हम मुजो अर्थ को मिसे देली से मिसिबा पॉइंट टा एक्चुअली इंफिनिटी बट वर्चुअल पॉइंट देखा जाए वर्चुअल आमे कोन एटा जो पैरेलल रेस टा आमे ताको स्क्रीन को आ इनफाइनाइट डिस्टेंस को नहीं परिवानी आमे एठी गुड देखे देबा कोन टिके ऑप टिके पडिवो Excuse me, sir. सर ये पैरेलल रेज ओडा एक्चुअली पूरा एब्सोल्युटली पैरेलल की ऑलमोस्ट पैरेलल they are parallel ओके सर geometrically हमें देखि परिबा later we can see they are parallel everywhere every text they are saying parallel but even the great professor S.C. Burma is silent about why you can get a virtual image in the case of concave mirror while the object is standing on the focus
you are getting enlarged, infinitely enlarged real image on the same side of the object, but from the observer's point of view, if you look in the same direction, you will find a virtual image on the other side of the mirror coming from a point. The sage in Sutta, he has never clarified, but it is true that you are getting some image, let's say point image coming from the other side. We can't put a screen there. Infinite distance is not possible to attain, but we can at least see the other side. We'll find a point. So, in my opinion, that when it is extrapolated, you are saying infinite distance is not really a reality in virtual case. So, in virtual case, it appears as if it is a point. But in real case, it will meet at the infinite distance. So actually, a point starts in a ray, a number of rays starts from a point and they become parallel. For example, and when the parallel rays come, they meet at a point, right? At the infinite distance. And the opposite way, if it is not a real situation, it's an inverse situation. The parallel rays extrapolated, you can't extrapolate, but it will look like as if it's coming from a point. The virtual infinite distance is virtually visible from a point, but the actual infinite distance is not realizable. But virtual, the meeting point is realizable. Clear Karnanti. So, what I was saying, actually, it will give theoretically a real inverted infinitely large image on the opposite side of the object, no doubt. Sabudaka opposite side re paithile eparjanto. But in this case, if we look on this side, on viewing from the opposite side of the from this side. I'm so sorry. From the opposite side of the object, image is found on the same side of the object. It extrapolate kale. Jodio infinite distance meet kariba kotha, if it is parallel, Brahma is saying that. But it will appear coming from a point, virtual and erect. Nahin, point mane. A point I would a point of Sabuda point. So you will get a virtual image if you look from this side. And screen re thori pariboni. Kahi na ita ette enlarged hobo. Screen re entire jinsa taku tome thori paribo nahi. Jodio really ita screen pai real. But screen re thori pariboni. But ei pot ku pale asibo jodi chahiba aro poto side ku tobe aro gote enlarged erect image tome dekhi paribo. Enlarged virtual image तुम देखि पारिबो बट साइड से जिनसटा तार भी हेतला यार भी हेतला एग्जैक्टली यार एई पटे थिला ए तळुक पळे आस्तला रिफ्लेक्शन हेकरी एटु रिफ्रैक्शन हेकि आरो पटे तो एई पटे तुम देखिबो एई पटे देखिले एठी गोटे तार virtual image पाइबो जदियो रिफ्रैक्शन परे यार एक्चुअली गोटे रियल इमेज आछी Finally, object between F and optical center. Focus optical center. They are divergent. Divergent means you have to extrapolate in the opposite direction so that you get an enlarged virtual image. A photo side go save padibo. Virtual image to तुम पर्दा रे अरेस्ट करि परिबन ना तुम एपट साइड को आसियो पड़िबो to see the virtual image of this object enlarged and on the same side of the object. A good case re on the same side of the object beyond 2f, right? Kintu concave lens is very simple. Infinite distance vasile, it will appear to have come from f2. It is the focus of our interest.
So এটা virtual point image হবো এপଟ সাইড রু দেখিলে infinite distance ରୁ যোଉটা ଅଛି সেটা ଗୋଟେ point দেখাଯିବ this is just ପୋଥି ବାଇଗଣ but actual ବାଡି ବାଇଗଣ ହଉଛି ଏଇଟା it may be much away from the 2f1 this is f2 this is 2f2 କି ଯୋଉଠି ରଖ ତମେ ଯୋଉଠି ରଖ between f2 and o नहीं जोट तुम रखो 2f1 जोट रखो किंतु इमेज टा वर्चुअल इमेज टा पड़िबो बिटवीन f2 and o देखो गोटे पैरेलल गला it will be divergent appear to come from f2 and आ गोटे सीधा सीधा चलीबो वाला optical center बाटो देखि it's a rectangular slab so that it meeting point एटा so एटा कोन हला ना it is virtual एपट साइड रासियो पड़िबो कारण पर्दार धरी परिबानी एपट साइड आसे पड़िबो and it will be virtual small size and in the same side of the object जो side रे से side रे तो आर बहुत सिंपल है गला so एटा तमे घरे करिवो sign convention exactly एका exactly u v h0 he सब एका sign same direction रे गले आर पट साइड रे पडिले the distance टा optical center एपटे पड़िबो प्लस एपटे पड़ले माइनस ho टा always positive he टा positive हेले इमेज रो सेटा सेम साइड रे आउ इटा हला इन्वर्टेड आउ फोकस टा पॉजिटिव कन्वेक्स लेंस रो डेफिनेटली सेपट साइड रे पडुची कन्वेक्स लेंस रो एंड एपट साइड रे पडुची इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट सेट पे कॉनकेव रो नेगेटिव किंतु आर लेंस फार्मूला अलगा सेठी थिला 1 by u plus 1 by v एठी 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f and एठी सेठी थिला minus v by u एठी plus v by u of course इरेक्ट हेले मैग्निफिकेशन टा पॉजिटिव एंड इन्वर्टेड हेले नेगेटिव एटा एकाधिक लेंस रो समाहार समस्तंकर पावर टा मिसी जीवो 1 by f1 एटा कलो एटा करो I'll give you 2 minutes time. Carsola. F plus ना minus. सर प्लस नहीं आउ भलो माइनस याडे जाइकरी याडे जाउची लाइट रो डायरेक्शन रो ऑपोजिट डायरेक्शन रे ओ रु ऑप्टिकल सेंटर रु एमिति हमें जाउचे हां एपोर्ट पर आई एम सो सॉरी प्लस कहलो ना यस एटा होचे असल फोकस f2 टा यस आई एम सो सॉरी एटा नकली फोकस एटा असली फोकस होचे f2 सेम डायरेक्शन रे अछि प्लस एंड पिन रो हाइट टा होची h o होची 2 सेंटीमीटर ए हाइट टा the distance of the pin from the lens eta u टा कोन होबो प्लस ना माइनस 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 ऑलवेज माइनस माइनस करना एटा लाइट रो ए डायरेक्शन जाउची लाइट द और एपट उल्टा आसीबो नेगेटिव is equal to 1 by f
So 1 by V is equal to 1 by 12 plus minus ले plus है जो 1 by U टा किंतु minus अच्छी U टा नीचे minus अच्छी A minus टाइटी plus है so loss आगु 60 12 50 60 minus 15 64 1 by 60 ताले V केते हला 60 plus 60 plus माने एपट साइड रे पड़िबो डेफिनेटली आमे जानि छु 80 पड़िबो निश्चय एटी पड़िबो इन्वर्टेड एंड जेहेतु 12 सेंटीमीटर तार फोकल लेंथ से अछि 15 ता माने बिटवीन f1 एंड f2 भितर से अछि तेणु f1 एसो निजे घरे लिखिबो तबे जाय कि तमर सरीबो f1 f2 भितर पड़ले बियॉन्ड f2 रे पड़िबो तेणु एठी जुआ पड़ला 15 15 30 f सॉरी 12 12 24 से 60 रे पड़ला बियॉन्ड 2f2 रे पड़ला सो साइज ऑफ द इमेज है केते हमें जानि छे मैग्निफिकेशन होची m HO by HE is equal to V by U plus नुए V टा बाहरला 60 U टा थिला 15 केते केते गुणा बढ़िला तार हाइट सर यूटा माइनस यूटा -15 सर yes -15 I'm so sorry मुझे भाबुतली इन्वर्टेड रे नेगेटिव आसे कथा एणु पॉजिटिव आसिलानी यूटा -15 तेणु एठी -4 माइनस माने इन्वर्टेड 4 गुणा बढ़िला किंतु इन्वर्टेड है एमती तुमे सबुडाक करिवो हमर भी से आंसर आछि -4 आछि बहुत अंक देछि एटा को सब छोट छोट अंक वंस बुझी गले सब जानि परिबा विथ रिस्पेक्ट टू GW अगर G अछि it is relative refractive index of glass with respect to water so it is NG by NW तो glass रो absolute किंतु velocity हला उल्टा NW by VW by VG velocity हला so से अनुसार मु सब करि दै छी तमे करिवनी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अछि एडा को मु बुझौतली एडा को लिभे देला को लिभे देबी या परे देला को लिभे देबी so we come to the close of optics item पढ़ाए ने आईटा तमे देखि दबो how the different parts of the eye what is the function of retina and other things so major part amaro reflection and refraction from spherical mirrors and spherical lenses respectively आपको घरे लिखि दबो आज मु किछि लिखैलिनी कारण एटा बड्ड चैप्टर टा आउ तेणु लिखैले मु आज सारी पार न था तेणु तमर काम होची तमे ताको लिखि दबो अच्छा मु गोटे कथा भाबुतली आर थरक मोर क्लियरली मन अछि हमर सॉरी पार नथिला इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सेटा को आमे आउ गोटे 3 दिनिया गोटे मास परे से पिला माने चाहिए अल्प पिला 10-15 जन चाहिए तेणु मु करिथिली सेपरेटली से चैप्टर टा गोटे दिन सरीबनी गोटे 2 घंटा रे सरीबनी इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम देखिबो तेणु व्हाट आई सजेस्ट मु देखिकरी निजे बहुत खुशी हे गली तुम्हें टिपी दियो एसएसटी केमिस्ट्री तुम्हें सर्च रे मारिबो मोर चैनल ना होची एसएसटी केमिस्ट्री मारिले ए प्लेलिस्ट रे मारिबो ए प्लेलिस्ट क्लिक करियो मु क्लिक करिछि यू विल गेट फॉर ओडिया मीडिया ओडिया रे इंग्लिश रे सबुथरे विभिन्न प्रकार रो पिलांक पई अछि
हेलो आज्ञा सर हाँ तेणु कुआडे गला सेटा यस एटी विभिन्न प्रकार अम्ल क्षार लवण 10म श्रेणी गोटे फुल ताकू प्लेलिस्ट मारले तुम देखिबो सेतरे 5टा वीडियो 1 2 3 4 5 माने तुम लेवल रु हायर लेवल पर्यंत +2 लेवल पर तुम लेवल छोट लेवल रु 5टा सेमिति तुमे देखिबो कोन ऑप्टिक्स हमर भी अछि आर वर्ष रो अछि व्यू रिफ्लेक्शन टा अछि रिफ्रैक्शन टा बोधे अन्य कोठी अछि किंतु तुमे गोटे जिनस बढ़िया पाइबो सेटा होची इलेक्ट्रिसिटी कोडाला हाँ एट देखो करंट इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इथरे केतेटा अछि जानिचो because I am so fond of that chapter and it's so complicated and easy. One hand it is complicated and on the other hand if you understand it is easy. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बाबा असरंती एटा तमर कोर्स नाही दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पूरा घंटे 25 मिनिट सेटा तू पढिबो एटा एटा सुनिला परे किछि मास्टर ताको सी कहले ई कोन जिंस एटा एमति हबो कॉन्सेप्ट सेटा क्लियर थिले हबो कॉन्सेप्ट क्लियर नथिले तमे डेफिनेटली गोटे पॉइंट रे बुझी पारुनो मना करूनो मु जेंति कहली ए जो appears to come from a single point sita even the author doesn't know he could not explain I am also not sure so I concede but it is a fact that you are getting a virtual image both in concave mirror while object is standing on the focus and convex lens when the object is standing on the f1 asli focus to the epote. So once you do not have you can't bluff so eta tame निश्चय पढिबो ओडिया रे मु बुझौची -4.445 is 10 to the power minus joule हबो एटा सब मु तमरो नाही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी दो नाही बट तमे पढिबो सो दैट तमर +2 रे कांसेप्ट पूरा क्लियर हबो हला देन आसिला करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी रो केतेटा 1 2 3 टा खाली करंट इलेक्ट्रिसिटी रो ए आउरी 4टा 5टा 6टा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 3 इलेक्ट्रिक मोटर आउटे एटा खाली मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट खाली मोटर रो प्रिंसिपल डाटा तापर इलेक्ट्रिक मोटर इन डिटेल्स विथ रियल मोटर सिमुलेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पार्ट 5 EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत प्रणोदित बल EMI से केमती इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुए लाइक मूवमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद्युत चुंबक तो से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रा 3टा सो एटा गणिले गणी होनी 15टा बोध ना कोन एटा अल्प टिके एटा केतक जानिबा कथा कोन एटा प्राइवेट रो अछि ना एटा 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 ये नाही एटा नाही एटा नो एटा लास्ट सो एटा को तुमे समय करिकरी देखिबो खाता अबे सबुट इंपोर्टेंट जिंस होजी कोन एटी एवं समस्त को शेयर करिवो सो दैट बेसी पिला मोर एफर्ट्स टाकू पाखरे पहुंची पारिवो कारण मु मुटे पब्लिसाइजिंग फॉर न थाए आज न हो काली दिन ए 1068 जन देखि
से तो पुणी केतेबेले पढ़ी पढ़ी 5000 हबो हो जे दिन लागू। अच्छा देखो सबुठु इंटरेस्टिंग जिनस होची ए मोर मार देले सबुथरे तार पाइबो, सबुथरे तार स्टडी मटेरियल अछि, सेटा को डाउनलोड करिवो। ठीक है एटी लाडू चार्ज तो चार्ज बॉडी ओडिया लिखा है बट नेवर माइंड ओडिया लिखा है किंतु जो माने ओडिया पिला नुह से माने किछि मनोना करिवनी कारण इक्वेशन गुडा सब इंग्लिश रे अछि। तार इंग्लिश ता मध्य मो पाखरे अछि आगो मु इंग्लिश करथिली तापर ओडिया ताको ट्रांसलेशन कली इंग्लिश ता भी पठे देबी। एटा कोन किछि नाही एठी ओ हाँ एटी बिंदु केमती देखो ना चार्ज मूल बिंदु ये सब गंडोलिया हो जाइए। आई विल ट्राई टू यू नो विदिन अ डे और टू आई विल ट्राई टू रिप्लेस दिस। ये भी थी तार इंग्लिश गुड़ाक भी देदेवी सब गुड़ाक स्टडी मटेरियल अच्छी एवं तार आंसर भी अच्छी। एटा आंसर कहीं नहीं आंसर भी अच्छी देवी सेमती यार मध्य करंट इलेक्ट्रिसिटी आसला विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिकल सर्किट रे केमती आमे विद्युत स्रोत प्रवाहित करेगा एवं तार विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस कोन केमती बाहर करबा एवं मोस्ट इंपोर्टेंट होची इलेक्ट्रिक पोटेंशियल संगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रो कोन संबंध अछि at the related से विषय ए वीडियो में डिस्कस करेंगे। এটা 45 मिनिट লাগিব तो चलो देखिए विद्युत स्रोत भाग एंड देखा यार मध्य मु गोटे करिछि आ स्टाइल रे आ बिकॉज़ इन द एंटायर फिजिक्स टॉपिक्स आई लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म द मोस्ट द स्टाइल रे करिछि सब भल लागे। I also equally like kinematics. एबे पढ़िबो kinematics जो 9th रे करिछि ताकू भी देखिबो 1B 9th रही परलानी पूजा छुट्टी हबो so we do a lot of other things so it more रे मारिले you will find its study material सेम सब गंडोलिया हो जाइछि जते बेले पीडीएफ नहीं से गंडोलिया हो जाइए देख ना मुझे देखनी विद्युत विश्लेष्य ना कौन एक विद्युत इलेक्ट्रोलिटिक हाँ विश्लेष्य केमती देख लो आई हैव नॉट सीन नोबडी हैज पॉइंटेड आउट आई विल चेंज इट आई विल चेंज ऑल दीज फाइल्स वेरी सून। सर प्लीज यार इंग्लिश वर्जन भी टेक सर से डिस्क्रिप्शन रे सर सर ए पीपीटी सर इंग्लिश टा भी सर डिस्क्रिप्शन रे सर हां दीटा को देबी ओडिया एंड इंग्लिश दीटा को दे देबी सब उडा करो। यस सर थैंक यू सो मु वर्तमान डिसाइड कली आमे डिसाइड कलु जे वी विल कैंसल टुमारोज प्रोग्राम so the 7-day program will be reduced to 6-day. I have some other assignments for which I had to cancel postpone 9th class. Therefore, we close our 6-day program and I wish you do well in the examination. Examination I July re kariba because June I am not staying. I am going out of Cuttack. So I'm sorry for the inconvenience. Okay, dino ame cut short कर देले आउ आज मध्य आमे अधिका समय करि पारुनी मोर सरी गला तम काम होची तम ताको आयत्त करिवो क्वेश्चन उडा करिवो लिखिवो सब सो दैट तमरे केवल 10th क्लास पई हेलानी तमर पूरा पूरी रही गला कॉन्सेप्चुअली तमर मुंडो भीतर रही गला and start planning electromagnetism टाइ छुट्टी भितर स्कूल खोलिया पूर्वरु सब गुडा को देखि दियो मु 2 दिन मते समय दियो 2 दिन and you keep on reminding om
You keep on reminding me so that within 2 days, I will not only change the Odia file. The Odia files are horrible. They are horrible. Nobody has pointed out. एते लोक देखिले किंतु डाउनलोड कला बेलू तो असुविधा पड़थिबो ना के कहि नाते मु निजे देखुची 14 वीडियोस बाय गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस प्रणाम सर गुरुजी प्रणाम सर नमस्ते सर प्रणाम हमर समर कैंप सर हबो ना 10th परे हां सर हमर 10th परे समर कैंप हबो ना सर हां निश्चय हबनी निश्चय आउ हबनी तांकर जेमती इलेक्ट्रिसिटी पाई 3 दिन करथिली मु रहुनी तेणु तमे सेति पई अछि दरकार भी नाही तमे भलो पिला मते एई एक्शन रे देखिवो रादर एठी मोर तंटी बस जाइछि सेठी तंटी भलो अछि तमे मो संगरे खेलिबो सेठी मु दे सेठी खेलिछि हला आ परीक्षा डेट ता मु अनाउंस करबी इन जुलाई बाय बाय